Room 11. Hello, good afternoon, sir. Hello. Good afternoon, sir. Myself, Dr. Bhagwat Ankush Karadkar. I am responsible for biodata reading. Today's session guest name is Arun Nivrutti Chandore. He is MSc PhD in botany subject. He is working as an assistant professor at Arts, Science and Commerce College, Mokhada at District Palghar. His teaching experience 11 years and research experience 16 years. He is published research paper at Australia, China, and Brazil. He is published plant science species described new to science 27 and plant genus described new to science 1. He's completed major research project completed 2 and minor research project 6. He's published 2 patents, and he is worked on the flora of the Pune University campus, a revision at Department of Botany, University of Pune, under the guidance of Dr. G.S. Chinchanikar, Professor, Department of Botany, University of Pune. His work on comparative floristic study of 3 sac grows from Taluka Hela Dist, Pune, at Agarkar Research Institute, Pune, under the guidance of Dr. V.S. Ghate, Scientist, D. Botany Group, ARA, Pune. He is life member and fellow of Indian Association for Taxonomy. He is life member of the Indian Botanical Society and membership of International Association for Plant Taxonomy. He worked member and members more than 20 college committees. His contribution in describing the new plant genus to science. Thank you. I request to Chandore sir, please give to speech for session. Okay, good evening to all. My voice is okay or not? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, now I am sharing screen. Is it visible or not? Yes, sir. Visible. Yes, sir. It is visible. Visible, sir. Okay, good evening to all. Today's dear all participants from various part of Maharashtra as well as out of Maharashtra. Now I am going to present here the plant diversity and conservation. Myself, Dr. Arun Chandore, and presently working as an assistant professor in Rayat Shikshan Samsthas. And my presentation is based on biodiversity. His slide is moving. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, we all know recently we are facing to NEP and NEP 2020. Here, this is one topic that is in 11 number, towards a more holistic and multidisciplinary education. In this topic, here towards the attainment of such a holistic and multidisciplinary education, the flexible and innovative curricula of all higher education institutes shall include credit-based course and project
in the areas of community engagement and service, environmental education. Today, my lecture is based on environmental education and here value-based education. In environment education, will include areas such as climate change, pollution, waste management, sanitation, conservation of biological diversity. And my presentation topic is biodiversity and conservation of biological diversity, management of biological resources and biodiversity, forest and wildlife conservation, and sustainable development of living. Now, today's presentation topic, that is biodiversity. Biodiversity referred to living things include plant, bacteria, animal, and humans. Scientists have estimated that are around 8.7 million species of plant and animals in exist. However, only around 1.2 million species have been identified and described so far, most of which are insect. Biodiversity is all the variety of life, or biological diversity is the variety and variability of life on earth. Biodiversity is a measure of variation of genetic variability, species diversity, and ecosystem diversity. Biodiversity is essential for human health and well-being, economic prosperity, food safety and security, support ecosystem to provide and purify water, important and irreducible source for medicines and other areas critical to the human and societies. Experiencing biodiversity positively influences physical and mental health and well-being. Here, are the photos of some endemic species of Barleria, that is Barleria lavi and Barleria pratensis. And these species are endemic restricted to our region, and Marathi or its local name is Koranti. Here, this diversity, you see the plant is animal and insect here diversity, and our existence depends on plant. Near about 15 to 60 species are depend on single plant species. And for this planet, each and every species is unique and important. And we have to conserve each and every species of this planet. Here, this is the some photographs of unique species, that is animal species, and it is in rare category. You know, this is the last photograph, that is slender loris. This is the one of small monkey, and the height size is about 15 centimeter only. Here, diversity. What is exact mean by diversity? Here, these all are legume plants, means peanut and other this group, Leguminosae family, and generally we call as Fabaceae family. These all are the flowers, and you see the diversity in legumes. Here, different types of flower, different type, this diversity in color, diversity in leaf, and diversity in flower, and even diversity in fruit also. And each and every species is unique. We can identify this each and every species by its fruit, seed, and flower structure. Here, this is the diversity of Barlerias. Barlerias or Marathi we called as its local Koranti plant, and near about 25 species in India, and most of species are endemic. Endemic means is restricted in particular area, and about 60 to 70 species are restricted to our Western Ghat region. Here, this is all our Barleria. Here it is local name is Kandil Phul or Kharpudi. This is a unique
genome, that is Ceropegia. The scientific name is Ceropegia, and most of species are restricted to particular patch of Western Ghat, and about the 70% species are endemic. Endemic is particular, found in particular region, or restricted only particular. This is a small species, herbaceous species, and you see the beautiful flower. One of my colleague, Dr. Sharad, is working on this group for his PhD topic. This is a Ceropegia, beautiful flower. And today I am talking on this diversity, about Indian plant diversity, or uh, here this is a different plant group. This is statistical record of plant diversity. In angiosperm, this flowering plant, angiosperm and gymnosperm. Angiosperm about 17,500 species in India, and the world for this planet near about 3 lakh species are reported. In gymnosperm, only 64 species are reported from India, and for this planet near about 60 or 650 species. Algae is one of dominant group. About 6,500 species are reported, and 40,000 species are reported from this planet. Fungi species is in India near about 14,500, and total species of fungi is near about 17,000. These all are the species is reported or identified species only, known species. Then bryophyte, the number is near about 2,850 species in India, and in the planet the number is 14,600. Pteridophyte is also important group or form this group. Here the figure, this is the figure, and this pteridophyte is number near about 1100 in India, and 10,000 species is reported throughout the planet. Lichen is this is a lichen, or its local name is dagadful. This is also important group, and the number is near about 2,000 and 13,500 species of this reported from throughout India. This is the entire panel scenarios of plant diversity. Then about here 29% diversity of angiosperm families. Near about this 200 families according to Bentham and Hooker, and 400 families near about according to this APG system of recent classification. Here, these are the 5 dominant families, important families, that is Asteraceae or Compositae family. This is a first number near about 22,750 species, followed by Orchidaceae is at its second number, orchid family, near about 22,000 species. Then Fabaceae or Legumineae, bean family, near about 19,400 species. Then fourth number at Rubiaceae, near about 1,300 to 150 families, this species. And the fifth number at Poaceae or grass family, near about 10,000 species. These are the 5 dominant families. It cover near about 29% diversity of total angiosperm. Means this out of 3 lakh species, only these 5 families, near about 87,000 species are reported. Here the money grows on tree. Somebody says money grows on tree. Here I am showing one example. This is according to report of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. A tree is सर worth. हिंदीचा पण वापर करा. Okay, sir, no problem. Actually, here मैं here जो है प्लांट है, प्लांट का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, और ये वैल्यू जो है अभी प्लांट की, दिस मनी ग्रो ट्रीज जो बोलते हैं जनरली, तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट रिपोर्ट, द सिंगल प्लांट वैल्यू ऑफ 50 ईयर, जो 50 ईयर ओल्ड का ट्री होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूँ इधर. Here, according to MOA, concluded that the 50-year trees is worth of rupees about 50,000 rupees if you cut for timber. अगर हमने टिम्बर के लिए यूज किया, लकड़ी के लिए, तो इसकी वैल्यू है नियर अबाउट 50,000.
But if left standing, it provide ecological service worth of rupees 23 lakh. अगर हमने वैसे ही 50 साल वो रखा प्लांट, तो उसकी वैल्यू है नियर अबाउट 23 लाख. हियर द ब्रेक ये दिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन. ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है 50 साल में नियर अबाउट 3,50,000. वाटर रिसाइकलिंग सर्विसेज नियर अबाउट 4,050 lakh. Oh, sorry, 4,50,000. Soil conservation near about 3,75,000. Pollution control services near about 7,50,000. And shelter provided for birds, animal. This value is near about 3,75,000. And the single mature tree, 50 years old tree, the value is near about 23 lakh. Therefore, the value of every plant species is invaluable. जो भी प्लांट है इसकी वैल्यू जो है प्लैनेट में इस इज यूनिक एंड इसका हम कोई मोल नहीं कर सकते ये प्लांट का. हियर यू सी दिस इज द अप्रोक्सीमेट 500-year old tree. यू सी दिस बट्रेस. ये जो प्लांट का जो जड़ है पौधा है अब दिख रहे हैं, तो ये नियर अबाउट 500-year old ट्री का है. अगर 50 साल का जो ट्री है उसकी वैल्यू 23 लाख है, तो यू कैलकुलेट what is the value of this 500-year-old tree. Okay, it is very important. Then now you calculate value of this entire forest. Okay, here so many species, different type of species. तो ये पूरा फॉरेस्ट का वैल्यू कितना होगा. तो हम ये नहीं करते. कि हम क्या करते हैं जनरली, जो पेड़ है काट देते हैं, उसके डिफरेंट सीजन है, बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, बराबर की. बट हमने एक एक प्लांट का जो वैल्यू कैलकुलेट किया तो इट इज इनवैल्यूएबल. हम इसका ये नहीं, और ये फॉरेस्ट की तो वैल्यू हम ये नहीं कर सकते डिफिन. देन हमें पता है ऑक्सीजन का जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है. और कोरोना की जो पेंडेमिक सिचुएशन थी, तो आपको पता है कि वह कितना इम्पोर्टेंट है. हर ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलना भी मुश्किल हो रहा था. और हाँ, ये पौधे जो है प्लांट हमें वो बिना ये करते, किसी शुल्क न लेते हुए हमें फ्री ऑफ ऑक्सीजन देते, तो इसका वैल्यू कितना होगा. तो वेस्टर्न घाट तो हमें पता है इट इज वन ऑफ हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ आवर इंडिया. एंड हियर you see this is the perennial river. Perennial means throughout year, throughout 12 months running water is only due to the because of forest. दिस इज द फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट जो होता है तो उसमें पानी वगैरह जब बारिश में हो जाता है, और बाद में ये पानी ये रॉ रिवर के थ्रू ही होता है. और ये 12 जो मंथ रहते हैं उसमें ये हो जाता है, रनिंग रहता है, फ्लोइंग रहता है. तो इसकी वजह से फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वाटर भी ही हो जाता है. In this planet, this is the map of Earth, and near about 36 hotspots are recognized in the world. Hotspot means क्या होता है, ये जो है यूनिक प्लेसेस होते हैं. और ये जो प्लेसेस है पूरे वर्ल्ड में 36 रिकॉग्नाइज किए. तो इसमें प्लांट की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, ज्यादा और यूनिक प्लेसेस है. हमारे जो भारत है उसमें in India there are two biodiversity hotspot. One is Western Ghat and another is Himalayan region. You see, Western Ghat is unique plant species, and most of the species are endemic. Endemic means in local is called as Pradesh Nishta. This species is restricted only Western Ghat region, and we call as the species are endemic to Western Ghat. Means पूरे और पे this species found only Western Ghat area, and that's why we call it as Western Ghat. These are the two hotspot, biodiversity hotspot. One is Western Ghat and another is Himalayan region in our country. Here, this is the map of India, and here this location is the Western Ghat area. This line here, you see this line is Western Ghat, and Western Ghat is starting at Tapi River in Gujarat. It runs through Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and ending at Kanyakumari. This is the entire patch of Western Ghat. And what is the Konkan region? You see here, this is the Konkan is generally the land between Western Ghat and
Arabian Sea. This is Arabian Sea, and this is Western Ghat. And in between the land, here you see this land. Hmm? Konkan is generally land between the Western Ghat and Arabian Sea, and between the Tapi River in the north and Chandragiri River in the south. In Maharashtra, Konkan includes all coastal districts: Mumbai, Mumbai suburban, Raigad, Ratnagiri, Sindhurga, Thane, and Palghar. These 7 districts are the coastal district, and the Konkan is here in Maharashtra, this district. Okay, now this is the Western Ghat and Konkan region area. Here Sahyadri, here this is the ranges of Sahyadri region in Maharashtra. This Western Ghat region generally, Western Ghat and Konkan region of Maharashtra is called as Sahyadri region, and this is the Sahyadri region. Here from this Gujarat border to here Karnataka border near to Belgaum. This region is called as Sahyadri region. Now, this is the basic structure of flower, because today's lecture and number of botanical name, and that's why I'm showing here some slides of botanical name, history of botanical name. This is the bisexual flower. ये जो है typical bisexual flower है. Either this is the male stamen and this is the carpel. This is the female sex organ. Then sepal and this is corolla. He is bisexual flower. Then this is the unisexual flower. ये जो मेज का ट्री है, सॉरी मेज का पौधा है, उसमें ये होता है, उसे मोनोसियस कहते हैं. ये ऊपर का स्ट्रक्चर होता है मेल फ्लावर है, और जो ये कॉर्न होता है वो फीमेल फ्लावर होता है. वो सेम प्लांट पे होते हैं, इसीलिए उसे मोनोसियस कहते हैं. और दूसरा जो है ये साइकस का प्लांट है. इसमें मेल जो है, मेल कोन है इधर, तो इसे बोलते मेल कोन इज ऑन डिफरेंट प्लांट एंड female cone is on different plant. That's why it's called as dioecious. This is the dioecious condition, and this is in maize it is a monoecious condition. Means both are unisexual, and in previous slides both male and female in same flower. This bisexual flower, and here this is the unisexual type. But unisexual again divided into two group. Monoecious एक ही प्लांट पे मेल होता है और फीमेल होता है, पर पोजीशन डिफरेंट होती है. और डायोसिस में मेल प्लांट डिफरेंट होता है और फीमेल प्लांट डिफरेंट होता है. देन अभी जो बॉटनिकल नेम की बात करेंगे हम, एवरी प्लांट के लिए एक सिंगल बॉटनिकल नेम होता है. दिस इज द मैंजीफेरा इंडिका. आम का ट्री है और इट्स मैंगो ट्री. ये बॉटनिकल नेम क्यों? क्योंकि हर 25-50 किलोमीटर के बाद हर प्लांट का नाम बदल जाता है. एक एग्जांपल देता हूँ. एक मैंगो को ट्री को मोर देन 50 नेम है पूरे वर्ल्ड में, और इट्स सो डिफिकल्ट. अगर हमने साइंटिफिक नहीं स्टडी किया तो क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसके अलग अलग नाम से हो जाएगा. तो साइंटिफिकली इसे एक ही नाम है बॉटनिक. दिस मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इज द जीनस, इंडिका इज द स्पीसीज, एंड एल स्टैंड फॉर लिनाइस. द लिनाइस हैज डिस्क्राइब्ड दिस स्पीसीज, दैट्स व्हाई द नेम इज मैंजीफेरा इंडिका, एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डिसी. ये प्लांट का ये साइंटिफिक नेम थोड़ा सा आगे आएगी, इसकी वजह से हमने ये एग्जांपल दिया है. और दिस इज द स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र, मैंजीफेरा इंडिका, स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र. देन अनदर एनिमल ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज द इंडियन जायंट स्क्वायरल, रेटुफा इंडिका. और जायंट स्क्वायरल जो है इसका नाम है, और ये एनिमल महाराष्ट्र का है. देन स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र, this Marathi is, or its local name is Taman, and its botanical name is Lagerstomia speciosa. Here, this is the national tree and Indian fig tree, or its name is Ficus bengalensis. Or its Marathi or its local name is Vadacha झाड. And this is our logo of our Rayat Shikshan Sanstha. This is the plant national tree, that is Indian fig tree, and botanical name is Ficus bengalensis. I took this photograph at Royal Botanical Garden, and the name, recent name is Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden, Calcutta. And this is the great banyan tree, and this is the largest banyan tree of Asia, and it is situated in
Calcutta Botanical Garden or Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden. You see this panorama of this banyan tree, Ficus bengalensis. This is the huge tree from outside. Then state mangrove tree. Recently, Maharashtra government has declared this Sonerisha alba. Mangrove is Kharpoti, Marathi called as Kharpoti, and this is the very unique species, or its name is chippy, Pandri chippy. A white color this salmon and is generally blooming at night. And mangrove or it found in this Kharpoti means is coastal area. जो कोस्टल एरिया रहता है उसके जो खारा पानी रहता है उसमें जो प्लांट ग्रो होते हैं उसे मैंग्रोव कहते हैं और ये जो मैंग्रोव है इसमें वो होता है ग्रो होता है और रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे स्टेट मैंग्रोव ट्री बताया है और इसका जो बॉटनिकल नेम है सोनेरिशा अल्बा एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली सोनेरिसी and Marathi we called as Pandri Chippy. Then we already know this is our national animal, Royal Bengal tiger, Panthera tigris is zoological name, and our national flower that is Lotus nilumbo or Nilumbo nucifera. The state bird of Maharashtra that is Pteron phaenicopterus and it is also called as yellow-footed green pigeon or its local name is Hola or Hariyar. The national bird we already know this is the Indian peacock and Pawa cristatus. Okay. Now here this is the panorama of Western Ghat. We know this is the Western Ghat. Already I told that it is a unique place and one of hottest hotspot of world. This is the biodiversity of Western. This photograph I took before 2 years back from Harichandragarh and Kalsubai area. This is a unique place. You see that this is the biodiversity, plant diversity. And here, this is the unique places. Why I am saying unique places? You see this hanging rock. And this hanging rock is our unique, it is a unique area or this is a plateau of high altitude. Plateau is Marathi, it's local Patara. And here, this is the how these unique places. I am showing one example. This is the plant Pinda conconensis, which was described in 19 some before 150 year back, and it is restricted only northern Western Ghat. जो सह्याद्री का रीजन है here it is from Ratnagiri, Raigad, Sindhudurg और वो जो घाट रीजन है up to Nasik इधर ही it is restricted this is plant. And recently we have collected another species that is Pinda Shiranga, the name after our guru. This species grow only this hanging rock and it is very unique areas. Nobody can go there, but fortunately we got this population. And we describe as a new species that is Pinda Shrangi. Earlier only the species that is Pinda conconensis. Now there are two species of Pinda. One is Pinda Shiranga and another is Pinda conconensis. The species of Pinda is very unique. Marathi we called our his local name is Panda, and this species is restricted only this Harichandragarh area, and it is a type locality. Means Harichandragarh is type locality because this species is described from Harichandragarh area, and now it is restricted only endemic to Harichandragarh area only. This planet on entire planet only found in Harichandragarh area and that hanging rod. This is we are the author. The paper published in Nordic Journal of Botany and also published on cover page of the journal. Another this carvi. This is a Topli carvi, Piocolis ricci plant. We found this species on this plateau high altitude area in northern Western Ghat during monsoon season. This is also unique plant. Then this is the Impatient Acaulis. This is also found in rainy season at Ghat region. And why I am showing here, this is why Western called as a biodiversity hotspot. This because of this unique species are found in Western Ghat. That's why Western Ghat is one of biodiversity hotspot.
This is a plant species. This is, you see left side small picture is, this is a Ceropeja conconensis, which recently described from these plateaus of Tilari area of Western Ghat. Another species that is Musari, Saped Musari plant. And in India, near about 25 species of Saped Musari plant. And out of 80 species are restricted to our India. And means near about 80% diversity of these species are endemic. And this is the differences of Chlorophytum thilarensis and Chlorophytum gutens. We see recently described this species. You see this comparative photograph, how these two species are different. And here these differences are mentioned. This is a botanical importance. And we propose, we describe as a distinct species. We already, everybody knows Karvi plant, Marathi Karvi, and it is a Strobilanthes calosa. Earlier name was Carvia calosa, and this is a unique species. How I say unique? The flowering only after 7 years. जो ये कार्वी का प्लांट है, इसको 7 साल के बाद फुल फ्लावरिंग आती है, और वो 7 साल के बाद वो प्लांट मर जाता है. वंस फ्लावरिंग फ्रूटिंग इज देयर एंड आफ्टर दैट द प्लांट इज वैनिश. वो प्लांट पूरा ही हो जाता है और उसको फ्लावर आने के लिए 7 साल लगते हैं. इसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं, मोनोकार्पिक कंसेप्ट. और ये जो प्लांट है ये अभी मास्क फ्लावरिंग, जनरली 80 to 90% फ्लावरिंग लास्ट ईयर को पूरे इसमें आया था, वेस्टर्न घाट में फ्लावरिंग आया था. तो ये भी यूनिक स्पेसीज है, ये एंडेमिक स्पेसीज है. और इसका यूनिक है कि ये फ्लावरिंग एक बार हमने इस साल देखा तो हमें नेक्स्ट फ्लावरिंग देखने के लिए 7 साल का वेट करना पड़ेगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग. तो ये कार्वी तो सबको पता होगा. इट इज यूनिक स्पेसीज एंड इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू आवर कंट्री ओनली. फॉरेस्ट के टाइप आपको तो पता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ये होता है. ये एवरग्रीन, हियर सम फोटोग्राफ्स ऑफ evergreen and semi-evergreen type of forest which are found in Western Ghat and Konkan region of our Maharashtra region. Then here this is the scrub and thorn forest, secondary forest, bamboo forest. It's a deciduous forest with bamboo bigs. This upper two photos shows this forest of bamboos breaks. Then here this is the scrub and thorn forest, and this is secondary forest. Then moist deciduous forest here in South Konkan region, and whereas this dry deciduous forest in North Konkan region. This is the photos of deciduous, और उसका पत्ता जो झड़ता है उसे तो deciduous forest बोलते हैं. और उसमें दो ही क्या है, moist deciduous और ये dry deciduous टाइप का फॉरेस्ट है. और इधर ये जो है स्पेसिस वेजिटेशन अलोंग रिवर साइड का जो ये होता है वो बहुत यूनिक होता है, स्पेशली इन वेस्टर्न घाट एंड कोंकण रीजन, बिकॉज हियर विल गेट इंटरेस्टिंग स्पेसीज, यूनिक स्पेसीज. This species not grown anywhere. It is specific habitat. It's found only this along river side. Here some forest type that is in Konkan area. It's evergreen and semi-evergreen patch. This is Suna Kolwan forest area in Konkan region, and here semi-evergreen type of patch in forest here. Here also the Dopeshwar waterfall here, evergreen and semi-evergreen type of forest, and even this waterfall is there. Here these are the another Oni and Savatkada area of forest, evergreen and semi-evergreen patches in Konkan region of this Ratnagiri. I took this photograph at Ratnagiri area of this Konkan, and here this is the another area with thick forest. Then either slope study area, a slope region, and in summer, and here this is the stream. Now you see this is the Western Ghat. Here Ghat region is toward the east side of Konkan region, and while this is the coast region toward the side of east side. Okay, east side there is generally जो कोंकण ये वेस्टर्न घाट है, अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट के और ये जो कोंकण रीजन है, ये कोस्टल रीजन, इनके बीच में वो प्लेटू है और कोंकण एरिया है.
और ये जो है कोस्ट, वेस्ट साइड को जो कोस्ट है, और इधर जो ईस्ट साइड को जो घाट रीजन है, इन इनके बीच में ये जो एरिया है दैट इज कोंकण रीजन। और हियर इट इज अ प्लेटो, जो रीजन है मेजॉरिटी ऑफ प्लेटो और इट्स लोकल वी कॉल्ड एज पठारे, जो पठार आपण म्हणतो त्याला, किंवा कातळ म्हणतो, इस कातळ किंवा पठार, एंड इट इज व्हेरी यूनिक। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये जो पठार है उनके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूँ। ये यूनिक है। जनरली in Maharashtra there are two types of plateaus based on altitude, that is low altitude lateritic plateaus are found in Konkan region। लो altitude जिनकी हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 300 फीट होता है, उनको लो altitude ही करते हैं फ्रॉम कोस्टल से। और जो जिसकी हाइट है 700 से फीट से ज्यादा होती है उसके हम हाई एल्टीट्यूड प्लेटो बोलते हैं। और वो इसमें रहता है कोंकण अपने घाट रीजन में वो मिलता है। दिस इज द लो अल्टीट्यूड प्लेटो। इन समर इट लुक्स अ बैरन लैंड। ये जनरली हम लगते हैं कि ये बहुत बैरन लैंड है, इसमें कोई ये होता नहीं। बट दिस इज फोटोग्राफ आई टुक इन समर सीजन, एंड you see the same area during monsoon season। This is the very unique plateaus during monsoon। Here short live species of monsoon vegetations are usually neglected and missed by botanists as they completed their life cycle in short period। Such a short endemic species are restricted to this plateau। ये जो प्लेटो होते हैं और ये पठार जो है मराठी में बोलते हैं, तो उनके ऊपर जो स्पेसीज होते हैं वो छोटी सी स्पैन के लिए होता है। उसकी जो लाइफ स्पैन होती है हार्डली 15 डेज टू 1 मंथ और 1 to 3 मंथ। एक एक तीन तीन महीने हमें वो प्लांट उधर देखने को मिलता है। और कुछ स्पेसीज ऐसे है कि वो 15 डेज 15 दिन में उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग की कंप्लीट होकर वो फिर मर जाती है, और उसका सीड सेटिंग भी उसका लाइफ साइकिल का कंप्लीट हो जाता है। ये ऐसे जो प्लांट है उधर मिलते हैं। और इसके क्या होगा, ये लाइफ साइकिल और उसे हम इफिमेरल प्लांट्स कहते हैं। ये जो प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो 15 दिन में या 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो टेक्सोनॉमिस्ट रहते हैं, बॉटनिस्ट रहते हैं, उनको ये प्लांट देखने को नहीं मिलते, और इसके वजह से ये प्लांट अभी तक इस प्लेनेट पे डिस्क्राइब होने बाकी है। और इसका अर्लियर आई वाज एट राजापुर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट 8 year, and that's why I got opportunity to search this plateau, and fortunately I got about 14 new species from these lateritic plateaus because I thoroughly work on this plateau। You see, this is the panorama of plateau। This is the beautiful plant Neonotis foetida। Foetida means its smell is bad smell, but you see this beauty of this flower, and it is on plateau lateral। Here, my BSc student is enjoying on plateau and also work on this plateau। This is the another plant Dipkyadi conconensis, the name after Konkan region। White color flower is Dipkyadi conconensis and restricted only these plateaus। And this species described before 150 years back। And here you see this is the beautiful white color flower, and this pink color that is Neonotis foetida। And this plant is ephemeral and restricted only restricted only these plateaus and only particular season or particular month। This is the Dipkyadi conconensis, and Marathi or its local name is Gai Mukhi, and here its name is Konkan। Here I am telling one story। This is the photos of some new species which recently described from low altitude lateritic plateaus। जो प्लेटो है उसके ऊपर से हमने स्पेसीज डिस्क्राइब की, यूनिक स्पेसीज है। ये पहले वो भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था पूरे प्लैनेट में, तो हमने इसको नया नाम दिया, और ये न्यू टू साइंस, साइंस के लिए नहीं हो गए। ये कुछ स्पेसीज है, अपोनोजोटन है, क्वर्नेंड्रा एलिगेंस है। एलिगेंस मींस इज आफ्टर ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका नाम दिया है। लेपिडागैथिस सिरंगा, नेम आफ्टर माय गुरु प्रोफेसर एस आर यादव सिरंगी। Eleocharis conconensis is the name after Konkan region। And here
This is Eleutheris neglecta, the name after neglected. This is common but neglected by taxonomies due to its marshy habitat and other this minute flower and etc. This is the Lepidognathus ushae, the name after Professor U.S. Yadav. Then another species we have recently described from lateritic plateaus, that is Dipcadis janachiranga. This is a Pogostemum jaitapurensis. You know this Jaitapur area near to Rajapur and coming nuclear power plant, उस एरिया से ये स्पेसीज डिस्क्राइब किए. ये जो है नया, ये जो कोतरपीर रहता अपना कोरिएंडर, उसके फैमिली का स्पेसीज है सिरंगा कोंकनेंसिस, वो ये डिस्क्राइब किया है. देन लेपिडागैथिस साबुआ, द नेम आफ्टर प्रोफेसर साबू. द इरियोकोलम रेटियानम, इन द नेम आफ्टर आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेटियानम. And this is Euphorbia Lakshmi Narasimham, after the scientist Lakshmi, Dr. P. Lakshmi Narasimham. The name after this, all the Latin name and name after his type locality, its unique character. Here I am showing one small pond. This is the lateritic plateau, and there are a small pond. This small pond. This is very unique because it's in only particular this here area. And ये जो पॉन्ड है इसकी साइज देखो, एक एग्जांपल है, मैंने क्रिटिकल स्टडी किया है उसके ऊपर, एक 5-6 साल स्टडी किया है. और इस प्लांट नियर टू जैतापुर एरिया ऑफ राजापुर, हियर मैप शोइंग. एंड इन द मंथ ऑफ जून, ये देखो ये कैसे रहता है. जुलाई में पूरा ये रहता है. अगस्त में वो कोरिएंडर को फुल फ्लावरिंग आती है. देन सितंबर में वो फ्लावरिंग जाती है, फिर दूसरे प्लांट को फ्लावरिंग आती है, फिर जनवरी में वो क्रिप्टोकोरिन रहता है, फिर दूसरे प्लांट दिखते हैं, और अप्रैल महीने पूरा बैरन दिखता है. अगर हम जो प्लांट, ये जो एरिया है, अप्रैल मार्च अप्रैल में देखेंगे, इट लुक्स लाइक बैरन लैंड, पूरा जो है नापिक जमीन लगता है. तो इसकी वजह से क्या पूरा स्टडी करना जरूरी है. क्रिटिकल स्टडी किया, और आफ्टर क्रिटिकल स्टडी we got this 5 new species. Here you see this Aponogeton natisi, Corneandra elegans, Blixa tendra, Iriocolum retianum, here Pogostemum jaitapurensis, and this is the cryptocoryl. The work is going on. And this is the beautiful flower of this species, Aponogeton natisi, then Corneandra elegans, Eleutheris concanensis, Iriocolum retianum, and Pogostemum jaitapurensis. Here, this is the species, first species, Eriocolum retianum. Already I told that this species name after our educational institute, that is Ray Shikshan Samstha. And this species is allied to another species, this Eriocolum cuspidatum. You see the left side, this Eriocolum retianum, and right side, this is Eriocolum cuspidatum. It is also endemic species, restricted to this Konkan and Western Ghat region. And this Eriocolum retianum, it is only 2 patches of in Konkan, and ये जो 2 पैच है पूरे इसमें राजापुर एरिया में, उसमें मिलती है, बाकी किधर भी नहीं मिलती है स्पेसीज. And this beautiful species, Corneandra elegans, the elegans name after his beautiful flower, Corneandra. His club-shaped anther, that's why the name is Corneandra, and the elegans is named after elegant flower. It's beautiful flower. Here, this is a panorama. You see, in April and May, this land looks like barren. अगर हमने April और May के month में हम visit दिया, तो it like barren land. But in July or August month, it is the unique, or it is full of this Corneandra elegans. Here, this is the species allied to Corneandra chelidoni. And here I am showing how we critically study this. In critical study, we clear all doubts, and in plant or everywhere critical study is very important. This is the species of Corneandra chelidoni, and the specimen is deposited at British Museum of Natural History, UK. और ये जो अनदर स्पेसीज है Corneandra elegans, ये जो है स्पेसीज है, उसके जो टाइप स्पेसिमन रहते हैं हर्बेरियम हो जाता है, ड्राई स्पेसिमन, वो हमने रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू को डिपॉजिट किए, और ये कंपैरिजन से पता चलता है दोनों अलग अलग स्पेसीज है. तो इसकी वजह से हमने डिस्क्राइब की.
और ये जो कैरेक्टर है उसमें जो डिस्क्राइब करते हो स्पेसिस का ये देते हैं हम, उसके अलाइड स्पीसीज में फ्लावर में देखो क्या फर्क है, लीफ में क्या फर्क है, उसके सीड में क्या फर्क है, और उसके पॉड जो होते हैं उसमें, और बाकी जो कैरेक्टर है वो जो डिफरेंस हम मेंशन करते हैं, और ये टेबल में सब इसके डिफरेंस दिए। और ये जो नई वाली है कॉर्निएंड्रा इलिगस, उसका फ्लावर देखो, और वो जो दूसरी है कॉर्निएंड्रा चेलिडोनी, इसका ये फ्लावर देखो। और ये सब कैरेक्टर कंसिडर करके हमने प्रपोज किया, और 2006 में, सॉरी 16 में ये स्पेसीज फाइटोटेक्सा इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो गए। देन these are my BSc student enjoying on that area. Uh, Here my guru Professor S.R. Yadav. The species describe Aponogeton natishi, the name after uh, Dr. S. Natesh. And here this is the unique species Aponogeton natishi resemble with Aponogeton appendiculus with its appendage embryo, but differ in having globular embryo with 16 to 20 spiral orange appendage versus 4 to 6 appendage in Appendogeton appendiculatus, and this appendage is not found in any species of the world. That's why my guru has described this species name after Appendogeton natishi. This is the species Appendogeton natishi, and here another Eleutheris concanensis. The species also described from Konkan region, and the name after concanensis. Here this is species allied to Eleutheris centifolia, and this is the differences are mentioned in the table. Then this is the Pogostemon zaitapurensis. This is also unique species, and here it is found in only Zaitapur and surrounding area. And here this is the differences of Zaitapurensis and Pogosemon deccanensis. This is the species. This further work is going on. Cryptocorin species. The work is going on. This is the flower of cryptocorin, and it belongs to family Araceae, arum family. आळू आळूची पानं वगैरे आपण हे करतो, तर त्या फॅमिली मधलं साधारणतः हे आहे सुरण सुरण वर्गातलं ह्या प्लांट आहे. आणि याच्यात जर बघितल्यात आपण सेकंड जे लेक्चर आहे आपण त्याच्यावरती करणार आहे, थ्रेट बायोडायव्हर्सिटीचे थ्रेट आपण बघणार आहे की बाबा धोके काय आहे बायोडायव्हर्सिटीचे. जस्ट आता पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण बायोडायव्हर्सिटी बघूया. आणि याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर चिरे कोकणामध्ये एक असते विटा वगैरे आपल्याला माहिती असेल कि जो पत्थर होते ब्रिक्स बनाते वो प्लेटो को कट करते हैं. आपने देखा लास्ट कुछ स्लाइड में. The plateaus are very important because of number of species are grown on plateaus. But this mining this or these bricks are removed for different purposes. This is one of reason to loss of biodiversity. This coming mega project, that is nuclear power project, and these are also the threats to the biodiversity. But we will see in next lecture this. This is another plant. This is common plant, that is Eleutheris neglecta. This is also unique plant. It is a common, but taxonomists, botanists neglected this plant because of it is grow in marshy area. But we observe critically there are number of differences, and we propose this as a new species, and the name is after its neglecta because of its neglected, and that's why then we now name Eleutheris neglecta. This is the species, unique species already. This is a cryptocorin species, cognata. And this species was described. I think my slide is not moving. Slide is moving or not? Yes, yes. Okay. It's moving, sir. Yeah. Okay. Here, this is a cryptocorin cognata. It is also unique species, and earlier taxonomists reported this species is extinct from the planet. But recently, we located some population in Konkan region, and this is also arum family. Then this is aquatic plant. This is a Wisneria triandra. It is belongs to Alice metis. It is an endemic plant. This is a Blixa echinusperma. This is Pangavat, this is local name, and this only in particular season found. Now, mangrove and aquatic ecosystem. Mangrove, everybody knows mangrove, or Marathi we call it as खारफुटी. जो पानी इस सॉल्टी वाटर में प्लांट ग्रो करते हैं उसे मैनग्रोव करते हैं. हमें तो पता है इसका यूजेस क्या है. सुनामी जब आई थी तो जो
जिधर जिधर ये प्लांट थे तो उनको ज्यादा ये नहीं हो गया, प्रॉब्लम नहीं हो गया, पर जिधर मैंग्रोव नहीं थे उनको बहुत सारा प्रॉब्लम ही करना पड़ेगा। इज नेचुरल बैरियर, नॉट, ये हमारा जो कोस्टल लाइन है वो प्रोटेक्ट करता है पूरा डिफरेंट पर्पसेस। मैंग्रोव प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम डैमेजिंग स्टॉर्म, waves, and flood. Mangrove also help prevent erosion by stabilizing sediment with their tangle root system. They maintain water quality and clarity. मैंग्रोव तो बहुत सारा ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव डाइवर्सिटी फाउंड इन कोस्टल रीजन टुवर्ड्स द वेस्ट साइड ऑफ कोंकण। जो वेस्ट साइड है हमारी कोंकण की, मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एरिया में मैंने वर्क किया है और मुझे इसके लिए इस एरिया के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बोलने वाला हुआ। और ये जो एरिया है इधर पूरे मैंग्रोव है, खारकुटी बहुत जो कोस्ट साइड है हमारे उसके ऊपर ये हो जाता है। तो वेस्ट कोस्ट में ये स्पेसिस फाउंड होते हैं। टोटल पूरे प्लैनेट पे 110 110 स्पेसीज मैंग्रोव के रिपोर्टेड है। टिपिकल मैंग्रोव मीन्स वो जो स्पेसीज है वो सिर्फ इसमें ग्रो होते हैं, जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें ग्रो होता है। तो ऐसे 110 स्पेसीज है रिपोर्टेड है। और उसमें से जो है अभी तो 25 स्पेसीज इंडिया से रिपोर्टेड है। एंड जो 25 स्पेसीज है वो भी यूनिक स्पेसीज है और वो सब वेस्ट कोस्ट एज वेल एज ईस्ट कोस्ट को भी मिलते हैं। एंड आउट ऑफ दैट 17 स्पेसीज वी हैव सीन ऑन वेस्ट कोस्ट, जो रत्नागिरी और इसका गोवा और रत्नागिरी का जो कोस्टल एरिया है उसने अबाउट 17 से 18 स्पेसीज रिपोर्ट किए। तो ये कुछ जो स्पेसीज है उसकी फ्लावरिंग है। जो ब्रुगेरिया जिम्नोराइजा है, जे Lumnitera racemosa, Sonerisha caesularis, then Avicennia officinalis, Rhizophora microta. You see here, this is the root system. This is a unique root system, prop root इसे कहते हैं। और ये फ्रूट है Avicennia Aegisurus corniculata, then Exophoria agelosa, Sonerisha apetala, and Acanthus ilisifolius. These are the some मैनग्रोव, टिपिकल मैनग्रोव के फोटो है खारकुटी। और ये जो प्लांट है स्पेशली उधर ग्रो करते हैं, वो सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं। एंड ये हमारे कोस्ट जो वेस्ट कोस्ट है उसके गोवा और महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट में हमें मिलते हैं। अभी जो प्लेटू जो मैंने बताया हो प्लेटू के बारे में, हाउ दिस प्लेटूज आर यूनिक इन इवन समर सीजन। जो प्लेटू के डाइवर्सिटी देखिए, वो जो प्लांट है इन मराठी वी कॉल्ड एज कोचा प्लांट, और इट्स यूनिक प्लांट। इसे भी 3-4 साल के बाद फ्लावर आता है, वो फिर प्लेटो के ऊपर मर जाता है और फ्लावरिंग पीरियड रहता है हार्डली 15 to 20 डेज। तो इसीलिए ये जो समर सीजन में हम उधर घूमे प्लेटो के ऊपर तो हमें 2 स्पेसीज मिली नहीं, वो हमने डिस्क्राइब की। और ये यूनिक कैसे है तो थोड़े से बताता है। इसके जो अलाइड है अभी पहले हमने डिस्क्राइब की लेपिडागैथिस श्रृंगाई, दिस स्पेसीज इज क्लोजली अलाइड टू लेपिडागैथिस लुटिया। लुटिया मीन्स ये येलो कलर का होता है और ये बाकी के डिफरेंस है उसके हिसाब से हमने वो ठीक है। एंड अनदर स्पीसीज दैट इज लिपिडागैथिस सब दिस ओशिया, वी डिस्क्राइब फ्रॉम दिस लैटो, जो मीन्स निग्लेक्ट करते पीपल और समर में ऐसा लगता है बैरन लैंड है, पर ये ऐसी स्पीसीज उधर ग्रो होती है। दैट्स व्हाई द प्लेटो इज इंपॉर्टेंट इन समर आल्सो, बिकॉज देर इज नो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर बट यू सी ब्यूटीफुल फ्लावर। वो पानी का एक ड्रॉप भी नहीं रहता है और कुछ भी नहीं रहता, बट आप देखो ये फ्लावरिंग और ये यूनिक जीनोम है और ये हमारे कोंकण रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है। दिस इज द Ipomea aquilata, which is a long flower near about 25 centimeter flower and it's night blooming, रात को फ्लावर ये होता है। इसकी वजह से भी निगलेक्ट हो गया होगा और ये हमने इधर से रिपोर्ट किया है। ये जो स्पेसीज है ये पहले डिस्क्राइब की गई थी 150 साल पहले और उसके बाद किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था। तो ये स्पेसीज हमने उस एरिया से किया है, कलेक्ट किया है। वन इज साइजिजम स्टॉक्साई, वो जाम्बुल रहता है, छोटा साइज रहता है एकदम, वो रहता है। अगले या तालगोटी, देन दिस इज हाइग्रोपेला आइपोमिया सैटिथिस। वो जो पहले जो 150 साल पहले या 200 साल पहले डिस्क्राइब किया था उसके बाद वी हैव रिपोर्टेड आफ्टर इट्स टाइप। दिस इज द कैम्प्टोराइजा इंडिका, द स्पीसीज वाज डिस्क्राइब बाय माय गाइड इन
I think 1982, and then this is a unique and restricted only Ratnagiri plateau. Now I am telling something about endemic plant. This endemic species, endemic plant. Okay, what is mean by endemic? It's restricted only particular region. Okay, now I'm here. This is a endemic plant of Western Ghat and Konkan region. So, ये जो plant है, it is restricted only Konkan and Western Ghat region. Here, this is the about one third endemic species found in the Western Ghat, and near about 4,500 species in Western Ghat. जो वेस्टर्न घाट है उसमें 4,500 प्लांट की स्पीसीज है, एंड अबाउट दैट वन थर्ड मीन्स नियर अबाउट 1,700 स्पीसीज आर एंडेमिक. ओके, वो पूरे सिर्फ वेस्टर्न घाट में हमें मिलेंगे. ये जो है अमोरोफाइलस है, देन ये जो मुसड़ी का क्लोरोफाइटम, देन ये डिप्केडिया. आई ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट दिस. Hypometicana, this is the Barleria. These are the some species. This is a small species. This is the Trithuria conconensis. This species was described by my guide in 1992, and the size of plant, this Trithuria, is hardly half centimeter. You see this red color, small red color flower. This is the photograph. This small red color flower, and the size of entire plant only half centimeter size. And this new family, Hydatillaceae family, added to India in 1992 with this new plant, that is Trithuria conconensis. These are the some beautiful photographs of endemic plant, and which collected from this Rajapur area of Ratnagiri district. Okay, Rajapur area. It is a very unique area, this plateau area, and these all are endemic plant which we collected from there. This is the monotypic species, that is Irinocarpus pneumoni, and monotypic means only one genus and one species. In Marathi we call it as cherry, cherry, etc. And it is nowhere it found. It is endemic. ये जो प्लांट एंडेमिक भी है, और ये प्लांट जो है एक ही इसमें है, मोनोटिपिक, उसका कोई दूसरा स्पीसीज नहीं. इरेनोकार्पस ये जीनस के अंदर एक ही स्पीसीज आता है, वो ही निमोनिक स्पीसीज आती है. देन वो जो नरक्या प्लांट मराठी में कहते थे, नोथोपोडाइटिस पोइटिडा, मैपिया पोइटिडा, उसमें जो रहता है कैंसर के लिए ड्रग्स होता है, एंटी कैंसरस जो होता है. एक 10-15 साल पहले क्या हो गया, इसके लिए ये पूरा प्लांट का ये हुआ, तोड़ लिया फॉरेस्ट में से, क्योंकि उसमें एंटी कैम्प्टोथिसिन जो नाम का ये केमिकल रहता है, और वो कैंसर के लिए ही करते थे यूज. उसके वजह से ये तोड़ गया. अभी ये प्लांट की बहुत कम हो गया पॉपुलेशन. देन ये सराका अशोका, ये जो प्लांट है वो सीतेज अशोक हम जो बोलते हैं, जो कल्टिवेटेड करते हैं हमारे गार्डन में, कॉलेज के इन फ्रंट यूनिवर्सिटी में रहता है, वो जो डिफरेंट रहता है, वो सीधा जो बढ़ता है वो अशोक रहता है, वो अलग रहता है कल्टिवेटेड. बट जो सीता सीट ऑन दिस प्लांट हियर, दैट इज सराका अशोका, दिस इज सीतेज अशोक, दिस इज द डिफरेंट. ये सीजल पिनीसी फैमिली का है, और इसका नाम है सराका अशोका और सराका इंडिका. दिस इज द स्पेसिस मेमेसाइलन अम्बेलेटम, और अंजन, अंजन आपण मराठीत त्याला हे म्हणतो. इट इज अ फ्रूट, इट इज अ कॉमन बट एंडेमिक. खूप कॉमन आहे कोकणात आणि वेस्टर्न घाटमध्ये, पण ते आपल्याच रिजन मध्ये. अँड हिअर दी सम स्पेसिस described after the name of conconensis: Amorphilus conconensis, Dipcadi conconensis, conconensis, Ceropeja conconensis, Eleucharis conconensis, Trithuria. In all described after the name of Konkan region. Here ये तो पता है अपना, जो वाटाना चौली वगैरह होता है वो लेगुम ग्रुप होता है. इट इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. हम डेली लाइफ में है यूज करते हैं, जो कडधान्य वगैरे आपण म्हणतो मराठीमध्ये. तो ये जो लेगुम है ये नियर अबाउट 700 to 800 स्पीसीज है. अभी नियर अबाउट 800 स्पीसीज इंडिया से रिपोर्टेड है. उसमें से बहुत ये होता है, ब्लैक ग्राम होता है, ग्रीन ग्राम होता है, पी होता है, वो पीज, देन ग्राउंड नट, ये सब ऑल बिलोंग्स टू फैमिली लेगुमिनेसी. एंड इट इज वेरी यूनिक. दिस इज अ डाइवर्सिटी ऑफ लेगुम. कितने भारत पूरे जो इंडिया में, तो अबाउट 800 स्पीसीज ऑफ लेगुम है इसके. जो इंसेक्टिवरस प्लांट के डाइवर्सिटी, इंसेक्टिवरस हम बोलते हैं,
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसे बोलते हैं, तो प्लांट भी ये होता है, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। ये जो प्लांट की जो लीफ है, यार यू सी, ये जो लीफ में इंसेक्ट ट्रैप हो गए, और ये उसको इधर जो इंसेक्टिवरस है, हमारे यहाँ दो जीनस है, वन इज ड्रॉसेरा एंड दिस इज अ ड्रॉसेरा इंडिका एंड दिस इज अ ड्रॉसेरा बर्मानी एंड अनदर इज यूट्रिकुलर। इनको क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट को खा लेते हैं, इसे मौनसारी प्लांट बोलते हैं। हाँ, और ये प्लांट में एक कैसा रहता है, यूट्रिकुलर है जो स्पेसीज है, ये जो प्लांट है इफिमेरल प्लांट, इसकी लाइफ साइकिल हार्डली 15 to 20 डेज होती है। बहुत डिलीशियस प्लांट होता है, नाजुक प्लांट होता है, और ये प्लांट 15 से 20 दिन में पूरा लाइफ साइकिल खत्म कर देते हैं। ये क्या होता है, इसको रूट के तरफ एक ग्लैंड रहती है, ग्लैंड जो जैसे हम रैट को ट्रैप करते हैं ना, उंदीर का जो ये होता है, एक वन से एंटर हो गया है वो पिंजरे में तो बाहर नहीं आ सकता है, वैसे ही इसमें एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड में इंसेक्ट एंटर करता है, फिर वो ट्रैप, वो जो फ्लैप बंद हो जाती है, फिर वो इंसेक्ट वही भी मर जाता है, और वो प्लांट उसको यूज करते हैं थोड़ी देर करके। तो दैट्स वाई इसे कहते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। ये दो जीनस है, वन इज यूट्रिकुलारिया एंड दिस इज ड्रॉसेरा। Then this is Apocynaceae member, and near about 400 species of this Apocynaceae. This is Calotropis, रुई वगैरे आपण म्हणतो, तर त्या ग्रुप मधले आहे साधारणतः, त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर 400 स्पेसीज रिपोर्टेड आहे. These are the species, unique species of here, and here some photographs of night blooming. हम जब फ्लावर देखते हैं, जो जनरली क्या होता है, डे में देखते हैं बहुत सारे फ्लावर, बहुत आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे फ्लावर होते हैं कि वो रात को ओपन होते हैं, रात के 5-6 बजे के बाद। कुछ प्लांट तो ऐसे रात को 12 बजे भी ओपन होते हैं फ्लावर उसका। ये ओपन होने का रीजन है पॉलिनेशन, जो परागीभवन करना होता है प्लांट को, वो इंसेक्ट उधर आ जाते हैं, वो पॉलिनेशन होता है। तो जनरली व्हाइट फ्लावर रहते हैं, वो रात को ये हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ जस्ट मैंने किया है। और कुछ जो प्लांट है, वाइल्ड प्लांट, ये वाइल्ड में मिलते हैं, बट वी कैन यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट। ये प्लांट हम ऑर्नामेंटल के यूज से यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल के लिए बाकी प्लांट की तरह, बट दे आर फाउंड इन वाइल्ड प्लांटों में, वो मिल जाते हैं सब प्लांट। हर्बेशियस प्लांट है, बुके के लिए या अदर पर्पजेस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड दीज आर द वाइल्ड ऑर्नामेंटल पोटेशियन प्लांट, दिखने में अच्छे लगते हैं तो हम वी कैन यूज। देन ट्री, बड़े जो वाले जो ट्री होते हैं, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको तो पता है एक ट्री का जो इम्पोर्टेंस है। 50 साल ईयर का ट्री का नियर अबाउट 23 लाख रुपीज का ये होता है ओवरऑल। ये तो ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और नियर अबाउट 3000 स्पेसीज ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। 3000 स्पीसीज ट्री के रिपोर्टेड है। एंड ये कुछ 150 प्लांट के कोंकण रीजन से किया स्टडी किया है, ये यूनिक स्पीसीज हैं ट्री। देन ऑर्किड, ऑर्किड तो ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, ऑर्किड का हम कमर्शियल प्लांटेशन भी कर सकते हैं। ऑर्किड के जो प्लांट है, ये दूसरे जो 50% प्लांट है दूसरे पेड़ पे ग्रो करता है, जस्ट फॉर सपोर्ट। इट इज नॉट एपीफाइड, सॉरी एपीफाइड बट नॉट सैप्रोफाइड। ये जस्ट क्या करता है, द प्लांट जस्ट टेक सपोर्ट, और बाकी जो उसको ये लगता है फूड्स वगैरह, वो जो मॉइस्चर होता है वो ये हवा से वगैरह ये ले लेता है। तो ये ऑर्किड के हम भी ऑर्नामेंटल में के यूज कर सकते हैं। ये जिस पेक्टेलिस गाइग्रेंस है, इसका फ्लावर है अबाउट 7 सेंटीमीटर अक्रॉस होता है, और ये भी बहुत ये हो जाता है ऑर्नामेंटल। ये सम वाइल्ड ऑर्किड है फ्लावर, और ये ऑर्किड I have collected near about 102 species of orchid, and we can use this orchid for different. This is the for one species Phalaenopsis, and here commercial cultivation just like Gerbera. Then हम जब जरबेरा वगैरह ये करते हैं, प्लांट कल्टिवेट करते हैं, उसी तरह ये ऑर्किड का भी कल्टिवेशन किया है। दिस इज द Phalaenopsis स्पेसीज, एंड ये पॉलीहाउस में उसका कमर्शियल कल्टिवेशन किया है। इसके कुछ फोटोग्राफ्स है। देन दिस इज अ नेकलेस ऑर्किड, जो उस फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं वगैरह, तो वो ये यूज करते हैं। इसी सीतेची वेणी, मराठी वी कॉल इट सीतेची वेणी, रिंको स्टाइलिस रेटोसा। दिस इज पॉलीडाटा पैलिडा, नेकलेस ऑर्किड। ये नेकलेस जैसा यूज करते हैं, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर का गुच्छ होता है, वो यूज करते हैं। और ये जो है, और ये बालों में इसका ये होता है, यूज करता है सीतेची वेणी, मराठी वो भी उस गांव के या
उस एरिया के लोग यूज करते हैं। जनरली हमें पता है ग्रासेस वी जनरली neglected, all we are neglected because we say that this is a minute flower, okay, and no attractive flower, but grasses is very unique, important. Here I am showing it is a green gold. Why I am saying green gold? You see, this grasses near about 1225 species of grasses reported from India. 1200 से ज्यादा स्पीसीज है भारत में से रिपोर्ट स्पीसीज। और ये किसी को पता नहीं हो, ये लगता है ये, पर ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, उसी भी फ्लावर आता है। ये जो चार प्लांट है हमें जो पता है, मेज पता है, राइस पता है, व्हीट पता है और शुगर प्लांट पता है, ये सब ग्रासेस है, ग्रासेस में आते हैं। और ये हमारी 80% जो रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट, ये फुलफिल कर देती है चार प्लांट। ये टिटिकम एस्टियम गेहूं बोलते हैं, जिया मेज मेज बोलते हैं, देन ओरेजा सटाइवा राइस, देन सकेरम ऑफिसियम शुगर केन। ये जो चार प्लांट है वो डे टू डे लाइफ के हमारे ये और ये सब आते हैं ग्रासेस में। ग्रासेस तो हमें लगता है माइन्यूट है, ये इसका कोई यूजेस नहीं, बट और total needs requirement, food requirement, other requirement fulfill only by this four plant. Grasses is neglected people, but you see here, this is the spikelet. Generally, I use this structure for identification. Okay, grasses. Here, this is a spikelet of grasses, and each spikelet is unique. And from this spikelet, we can identify each and every species of grasses. Here, this is the spikelet diversity. You see, lower globe of this spikelet and each and every spin. If you have a lens, my 10x lens, you can see this structure of grasses. And you know, this is a grasses is common throughout, grow everywhere. ये सब तरह बढ़ते हैं आपके कैंपस में आजू बाजू में होंगे। जस्ट वो 10x की लेंस रहती है, उसके आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, और इसके with the help of this structure we can identify grasses. This is the genus, small genus Glycoprova. One of my colleague, Dr. Gosavi's work on this genus for India. And here you see this lower globe. It is a unique lower globe, and with the help of this globe, we can identify species. Here, two on species generally found in high altitude, and here is a single on species generally found in low altitude plateau. Already we see this plateau of high altitude. It is जो पठार जो है और जो प्लेटो है वो वेस्टर्न घाट में रहते हैं, और जो लो अल्टीट्यूड प्लेटो है, कमी जो लेवल अल्टीट्यूड के प्लेटो है, वो कोंकण में ही मिलते हैं। तो ये जो स्पेसीज है जनरली कोंकण में ही हो जाता है, और ये कुछ स्पेसीज है तो वेस्टर्न घाट में भी। मीन्स अल्टीट्यूड का इतना भी डिफरेंस ये स्पेसीज से पता चलता है। देन दिस इज द डाइकैंथोनिडियम एंड दिस इज एंडोपोवा. This is a monotypic. Both are monotypic and just like Irinocarpus. Here I am telling one story of this is Hobardia. This is small gourd, small grass, and earlier this species was described by Bohr in 1950, and this species collected by Sedgwick in 1990. Okay, this is the Hobardia heptanuran, and nobody has collected. Only two specimen is deposited at Kew, London. रॉयल बॉटनिकल गार्डन में है, उसमें उसके डिपॉजिट थे, दो स्पेसिमन थे, हार्बेरियन स्पेसिमन। उसके बाद वो हमारे जो गुरु है उन्होंने प्रोजेक्ट डाला स्पेसीज कंजर्व करने के लिए, और वो दूसरी भी स्पेसीज हमें मिल गई। यू सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसीज. दिस इज ओबार्डिया डायंट्रा एंड दिस इज ओबार्डिया हेप्टेनोरा. एंड हियर दिस इज द ग्लाइपोक्लावा संथापावी ग्लाइपोक्लावा, दिस heteroprogam, this pinnipix here found in coastal area, and this plateau full of grasses. ये जो प्लेटो है पूरे ग्रासेस से ये आपको ये लगते हैं. देन अनदर ग्रुप सेजेस और लवाड़े से लवाड़े बोलते हैं, या ये इसका नट जो है बहुत यूनिक होता है, और ये नट के हिसाब से हम वी कैन आइडेंटिफाई द स्पीसीज, ईच एंड एवरी स्पीसीज ऑफ दिस. यू सी दिस ब्यूटी ऑफ दिस नट और सीड, यू कैन से फ्रूट नट सीड. ओके, ये जो ब्यूटी है उसकी नॉट अपना जो ये रहता है डायमंड या ये होता है, इस ऑर्नामेंटेशन बहुत अच्छे होते हैं, और ये ऑर्नामेंटेशन की वजह से हम ये स्पेसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये दिस ग्रुप जनरली निग्लेक्टेड बाय पीपल बिकॉज ऑफ इट ग्रोज इन मार्शी एरिया. ये मार्शी एरिया में बढ़ता है, इसीलिए टेक्सोनोमी से निग्लेक्ट करते हैं. बट आप इसके जो देखते हैं फ्लावर, दिस
fruit is very unique, and that's why it is a very unique genome, and we have to conserve this all species. This is another species that is here you see the seeds or fruits of Eucaris gododi, this species which recently described, and morphologically seeds of each and every species is unique, fruit is unique. In these two photographs, scanning electron microscope photograph of these two species, this is the Eucaris dulcis. Here you see the bristle with barb, and uh, um, another species that is this Eucaris bodoti which we recently described, and here this is a bristle, smooth bristle. This neck is different, this surface is different, and we can identify each and every species with the help of this microscope of scanning electron microscope. Then another species which we recently described, that is Eucaris convensis from Kandwa region, and this is the nut is very chocolate color nut you see, and uh, this is the group of Eucaris acotangula, and this is we describe we revise for entire India, and here you see the photographs of about 32 species of this Eucaris. Each and every species unique nut, unique ornamentation, and we can easily recognize as a species level, and you and taxonomists or botanists we can easily identify. Though plant is marshy, but we have to study properly, and we have to focus each and every group. This is a just photograph of uh, our nut photograph, microscope photograph of about 32 species of Indian Eucaris, and anybody can identify each and every species of Eucaris only these two plates of nut. No need to go other. Then another group that is Eriocolon. Eriocolon is also generally neglected. This is a small group in India, about 110 species of Eriocolon, and the most of species we can about 80% species we can identify. Its head, you see this 9 photograph, and each every species is unique, every species different, and from morphologically we can identify this Eriocolon species. Then this is the Trithuria. Already previous slide I told about this species. This is a very small species, and the height of this species near about, and this is a small red color flower. It is a one anther is here and surrounding other female flowers is uh, female. Here female is at the center, and all other male flowers at its surrounding. The size is hardly one mm, one or at least 2 mm only, and the entire plant is about half centimeter. The plant described by my guru in 1992 as a Trithuria concarensis from Vaibhav region, and the family is in India. Uh, then this photograph I think just this is the Bombex insignia plant, and this is a unique plant, and this is endemic to Asia. Here, this is the first part of my lecture is over, and uh, next part, if anybody has doubt, you can ask. After as per guideline, after 5 minutes we will take break, and after that we will discuss about the conservation. Now, this first today's first session is over. If anybody has problem about some this presentation, you can ask. आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो. अरे, आवाज आ रहा है कि नहीं मेरी? हाँ सर. आ रही है ना? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम ये कर लेंगे. आफ्टर 10 मिनट वी विल ज्वाइन वंस अगेन नेक्स्ट Hello, sir. सेशन. हाँ, यस सर. Sir, what is the economic importance of all grasses? Diversity. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट आम्ही ग्रासेस के तो ये सॉइल बाइंडर है,
बाकी के जो हमने 4 प्लांट के स्पेसीज बताया मैंने, वो जो ग्रासेस है ऑलरेडी, वीट, राइस, शुगर केन और मेज, वो आप सब ग्रासेस है। तो आप डेली यूज करते हैं, हम फूड के लिए यूज करते हैं। और बाकी जो राई, नागली वगैरह, नागली, नाचनी हम बोलते हैं, वो जो सब प्लांट है वो हम तो डेली यूज करते हैं। और बाकी तो उसका जो दूसरा, ये तो फूड का हो गया। दूसरा जो सिट्रिनल ऑइल जो बोलते हैं हम, गवती चहा किंवा आपण हे म्हणतो, त्याच्यापासून इसेन्शियल ऑइल हे करतात. आणि इकॉलॉजिकली एन्व्हायरमेंटसाठी तर खूप त्याचे रोल आहे. Sir, what about elephanta grass? एलिफंटा ग्रास, Yes. एलिफंट ग्रास, Yes, sir. Yes. एलिफंट ग्रास, आय थिंक दिस कॉर्कस इज देयर. सॉरी, नहीं मुझे तो नहीं, मैं देख के ये करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ये बताता हूँ उसका. Okay. Okay, sir. हाँ. और आपको तो पता है बाम्बू भी एक ग्रास है. बाम्बू जो है ना, बाम्बू ग्रास है, पर वो टॉलिश ग्रास है, बरं का. बाम्बू भी ग्रास में आता है. शायद वो एलिफेंट की वजह से आप ये कर कहते हो, बाम्बू का ये बता होंगे. Sir, how can an individual help to promote in biodiversity? अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दिखाना हो, कुछ एग्जाम्पल है हमने किया है कि बाबा क्या कर सकते हैं हम कॉलेज. आप, मुझे तो पता है आप सब कॉलेज लेवल के या इसमें होंगे, प्रोफेसर हो. तो आज कुछ स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम हम ये करके कंजर्वेशन के ये कर सकते जी, हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर है. अभी तो yes, sir. डाइवर्सिटी देखी हमने, किसने टाइप की डाइवर्सिटी है, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, हमें क्या कंजर्व करना चाहिए. तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे उसके ऊपर. Okay, sir. Thank you. ठीक है. आफ्टर 10 minutes we will join once again. Okay, sir. Thank you.
Okay, good evening to all. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. 43 नंबर जो है ना, उन्होंने हैंड रेज किया है, वो उसकी वजह से कुछ स्क्रीन देखने को प्रॉब्लम होता है। अगर 43 नंबर का कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने हैंड रेज किया है। शुरू करेंगे। ओके सर। हाँ, ये सेशन किसी को अभी क्या है, क्या करना है, क्या डिस्कस वगैरह? मीटिंग है, हमको आऊंगा मैं 6 बजे। हाँ, 3 दिन। रोल नंबर प्लीज। अभी तक 3 पॉइंट देख भी एक बार देख लेना पूरी है। रोल नंबर 12 प्लीज। हाँ हाँ, उससे दे देना, दोनों की फाइल नहीं चल रही। हाँ, नहीं ऑटोमेटिक चेक हो जाए। उनकी पता चल रही है, उनको जाना नहीं Roll पड़ेगा कल number तो। 12, switch off your mic. Okay, now the second session of this today's lecture. Now I am going to discuss biodiversity conservation. तर मगाशी एक प्रश्न विचारला होता कोणीतरी बॉटनिकल म्हणजे किंवा इलेफंट ग्रासला काय हे केलं जातं बाबा, आहे का ते? त्यांनी इलेफंट ग्रासचं विचारलं होतं. Yes, sir. Yes, sir. हा, ते त्याचं जे आहे ना, पेनिसिटम, आपण बाजरी जे म्हणतो ना, बाजरी म्हणजे पेनिसिटम टायफॉइडस असते, आणि इलिफंट जे ग्रास आहे ते पेनिसिटम पर्प्युरेरम म्हणून असते. तर ते हा, हा. आता बऱ्याच ठिकाणी लावतात. ते असं थोडस याच्यामध्ये असतंय, उंच वाढतंय बऱ्यापैकी, म्हणजे, आणि ते बाजरीच्या जातीचे तिथे गणामध्ये पेनिसिटम हा बाजरीचा जो गण असतोय ना आपला टायफॉइडस, त्याच्यामध्येच हे पेनिसिटम पर्प्युरेरम म्हणून हे असतंय. तर ते इलेफंट ग्रास म्हणून वापरतात. ते पेनिसिटम होएंकॅरी म्हणून एक दुसरे स्पेसिस असते, ती सुद्धा याच्यामध्ये वापरतात. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. नंतर
Now this second lecture we are going to discuss the conservation of biodiversity, and here I'm showing some examples of how to conserve biodiversity. Somebody asked about the which step we have to taken for conservation of biodiversity, and some small examples I'm showing here with the help of slide. You can see first here this is the uh, gingiber, and this is a flower of gingiber. Generally we use the rhizome as a ginger. Rhizome जो है use करते हैं हम ginger करके, and this is the members of gingiberacea. This is a diversity of gingiberacea, and here gingiber. Um, this is a curcuma haldi. Then this is ginger. This is a costus alpinia. Then this is gingiber. All gingers, different species of ginger, and previous species of ginger, that is gingiber officinale, we generally use as a ginger in day to day or daily uses. Then this is the busa, uh, NCT superbum, then sterligia. These are all members, wild members of belongs to gingiberaceae. जो जिंजर ग्रुप है, आलं आलं जो वगैरे म्हणतो आपण, आलं किंवा हळद, जो हल्दी और इसमें, तो वो सब इसमें फ्लावरिंग है उसकी. जो वाइल्ड स्पेसीज है उसमें आता है कॉस्टस आता है, देन जिंजिबर आता है, देन कैना आता है, कुरकुमा आता है, एनसीटी आता है, देन रेवेनला हिलिकुनिया, then Sterligia, Elitaria, this Belchi. These are all wild members of this curcuma and ginger. Then this is the species of chlorophytum. Some species of chlorophytum. This is Musali species. Already I told that there are about this 24 species of this genus is reported from India, and out of these 7 species have been described last decade by various scientists. जो 24 स्पेसीज है उसके से जो 7 स्पेसीज है ये भारत के जो है उधर इसमें ही क्या, क्योंकि बिकॉज ये इफिमेरल में आता है और फ्लावरिंग पीरियड इज वेरी स्मॉल, हार्डली 8 to 10 days, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेग्लेक्टेड. एंड इन लास्ट जो 10 year है उसमें नियर अबाउट 7 स्पेसीज का डिस्क्राइब किया है, और इसके रूट जो है मेडिसिनल है. बोरलेरम करके स्पीसीज है, इसे मराठी में सफेद मुसड़ी कहते हैं, और ये बोरलेरम जो स्पीसीज है वो जनरली ये यूज करते हैं मेडिसिन के लिए. देन कॉमेलिना, दिस इज द मराठी वी कॉल्ड एज केना, एंड दिस इज द मेंबर ऑफ फैमिली कॉमेलिनेसी. The Commelina, then Mordania, Cyanotis, these are the genus of in the family Commelinaceae. Then another group, important group, palm group, palm diversity. It is Ericaceae family or Supari family, Nariyal Supari family, and the palm. Most of the species of palm are cultivated, and some species of wild, that is Calamus, Phoenix, Oripa, Aringa, Pinanga, etc. ये जो पाम है जनरली हम ये करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं. जो एरिका और सुपारी और नारियल कोकोनट इसमें ग्रुप में आता है, और इसमें जो कैलामस, ये जो वेद बोलते हैं इसके फ्रूट है कैलामस. देन वही कुछ जो वाइल्ड स्पीसीज है, फेनिक्स, कोरिपा, अरिंगा, पिनेंगा, एटसेट्रा. दिस इज द अरिका पाम or Ariaceae family, palm group. Then this is Ariaceae, 26 genera and 25 species of Ariaceae are reported from India. And here this is a special type of inflorescence, paddock type of inflorescence. Here you see this is a flower. This is a male flower, this is a neuter, and this is a female flower. Then this is a neuter, and this is upper side male flower. And sometimes the neuter absent, only female flower and male flowers are present. And this is the diversity of Suran, or Marathi, or its local name is Suran group. And here special means paddock type of inflorescence. This flower is very small, and here this is a spathe, and it is appendage. Then it is a
neuter group. This is the rapid of phallosection in India. How we can describe species? You see, this is a neuter shape. The neuter flower, the shape is different, and on the basis of this character, we can describe species. The flower character is very strong while describing new species. Here, this is a Suran plant. Suran Sapkanda. Mean the inflorescence look like snake. That's why it is Sapkanda. Marathi called as Sapkanda, and it is Arissima, genus Arissima, and some species of Arissima found in India. And out of that, most of species are endemic to our region. This is Arissima sayedrica, Arissima lisnolti, Arissima murray, Arissima sayedrica variety gatica, Arissima siudacini, and Arissima neglecta. This is the plant Kevda plant, or Marathi. This is Kevda name Kevda, and it's pandanus. Odoratismus is botanical name, generally found in coastal region. This is the fruit of pandanus, and you see this is the coastal area, found in coastal area. Then it is another endemic species, NCT superbum, generally grows on hanging areas of Ghat region, rocky places, and it is endemic NCT superbum. जो बनाना होती है, बनाना की वाइल्ड स्पीसीज होती है, और उसमें छोटे छोटे सीड्स भी होते हैं. Then now every plant or every individual of this planet is very important. That's why our duty to conserve each and every species of this planet. And you see, this photo gives message. Without this plant, nothing in this planet. Everyone has need of plant for different purpose, food, survival, etc. Okay. This is the hornbill, we know, and he's asking, where is my plant? Okay, already this thickness, the Kajra in Marathi called as Kajra plant, and it is a famous plant in Konkan region. This fruit is generally used by food, this hornbill, and day to day or different purposes, these Kajra plants are destroy or deforestation, and number of individuals are reduced, and that's why this species of hornbill also simultaneously reduced, because it is a unique. ये जो plant है काजरा का, it is a medicine, highly medicinal plant. This is a strychnus, botanical name is Strychnus naxomica, and Strychnus जो नाम का वो chemical है उसमें रहता है, वो हाईली मेडिसिनल होता है. और ये जो प्लांट है उसके फ्रूट ये खाता है हॉर्नबिल. जो प्लांट का ये डिफरेंट पर्पजेस की वजह से क्या हो गया, फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट फायर, देन रोड ब्रॉडनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस प्लांट फॉर डिफरेंट पर्पजेस एज अ वुड etc. That's why the population is day by day reducing, and simultaneously the population of hornbill is also reducing. वो प्लांट कम हो जाने की वजह से वो जो हॉर्नबिल का पॉपुलेशन भी क्या हो गया, कम हो गया. और ये इंडिकेट करता है कि ये प्लांट कितना इम्पोर्टेंट है. एक जो प्लांट है तो होता है. बायोडाइवर्सिटी our planet has been declining at an alarming rate in recent years, mainly due to human activities such as land usage change, deforestation, invasive monoculture, urbanization, etc. Pollution and climate change, invasive alien species, biodiversity loss can increase the incidence and distribution of certain infectious diseases which are lethal for humans. Over the past 100 years, biodiversity loss has taken place. Extraordinary change in land and sea use and the overexploitation of natural resources, unsustainable agriculture production, and use of wild species for food and fuel can be reduced of biodiversity. ये जो देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में क्या कम क्यों हो रही है, तो हमें पता है वो लैंड
जो एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट लैंड का यूज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मोनोकल्चर मीन्स एक ही स्पेसीज हम ग्रो करें डे बाय डे। अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारा वो जो एग्रीकल्चर या लैंड है, लैंड का फॉरेस्ट लैंड का कन्वर्जन वो सिटी में या कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है। तो अभी जो देख रहे हैं तो बहुत सारी स्पेसीज ही हो रहा है, फास्टली रिड्यूस हो रहा है। और ये लॉस जो हो रहा है उसके वजह से अब क्लाइमेट चेंज, ये तो पता है हमें, सी वगैरह उसकी लेवल भी बढ़ रही है, जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है। एंड ये जो अनदर रीजन इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। जो वाइल्ड स्पीसीज है उसका फूड के लिए और फ्यूल के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर रीजन है, बायोडाइवर्सिटी के लिए। Therefore, it has become necessary to protect our biodiversity. The practices of protecting and preserving the wealth and variety of species, habitat, ecosystem, and genetic diversity on the planet is important for our health, wealth, food, fuel, services we depend on. It plays an integral role in supporting many sectors of development. तो हमें जो है ये प्रोटेक्ट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी और उसके हैबिटेट, स्पेसीज, उसकी इकोसिस्टम और जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सब ये करना चाहिए कि वो फ्यूचर में हमारा वेल्थ, हेल्थ, फूड, फ्यूल, ये सब उसके ऊपर हम डिपेंड है। तो अभी ये कंजर्व किया तो दिन नेक्स्ट जो है जनरेशन उसके लिए ये हो जाएगा इसका। Biodiversity conservation protect plant, animal, microbial, and genetic resources for food production, agriculture, and ecosystem function, such as fertilizing the soil, recycling nutrients, regulating pests and diseases, controlling erosion, and pollinating crop and trees. दो जो जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट हमें बचाना होगा। इट इज यूनिक, अर्थ इज यूनिक, एंड वो हमें जो सेव करना हो तो हमें वी हैव टू प्लांटेड मोर ट्री। देन a majority of the world's poor live in rural area and depend upon forests, water, wetland, fields, and forture for their livelihoods. Biodiversity conservation is vital for economic growth and poverty reduction. Biodiversity conservation can help address the effect of climate change. Conserving habitat can reduce the amount of carbon dioxide released into the atmosphere. Conserving mangrove and other coastal ecosystem can lessen disastrous impact of climate change such as flooding and storm shocks. Then biodiversity, the threat we have to discuss here, threat or to biodiversity, extinction of species, biodiversity conservation and conservation priority, means which species we have to conserve. और जो बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट है वो हम ये देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी के जो थ्रेट्स है इसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मीन्स वो जो मैन मेड है, जो सब एक्टिविटी उसकी वजह से वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। देन डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, डिक्रीजिंग हो रहा है बहुत सारा। देन टूरिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेजिव वीड्स, exploitation of biological resources, conversion of forest land for agriculture. Okay, these are the major threats of biodiversity loss. Then extinction of species. There are three major extinctions: natural extinction, mass extinction, and anthropogenic extinction. In natural extinction, here the species are diminish because of environmental forces such as climate change, natural disaster, earthquake, drought, then uh, tsunami, etc. Species decline number gradually.
This is the natural extinction. Then in the mass extinction, there has been at least 5 mass extinction in the history of life of Earth. लाइफ जो अर्थ की लाइफ में 5 बार अभी तक ये हो गया है, मास एक्सटिंक्शन हो गया है। और हियर शॉर्ट और सडन फेनोमेनन कॉज बाय unnatural catastrophes such as volcanic eruption, and over 50% of all species wipe out at once in mass extinction. And anthropogenic extinction, here agriculture, then deforestation, mining, man-made activities. Here anthropogenic extinction, there are extinctions of special forms of surface of Earth is due to the human activities, that is hunting, deforestation, then mining, agriculture land, etc. Culture, etc. Here biodiversity conservation and conservation of biodiversity. How to conserve biodiversity? Here there are 2 types of conservation. One is in situ conservation and another is ex situ conservation. In situ conservation means the protection of biodiversical component in its natural habitat, that is protected area, then biosphere reserve, then national park, then wildlife sanctuary, sacred grove, sacred law. प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसमें हमें कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट in its natural habitat, for example protected area, then biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuaries, sacred groves means वो देवराई जो बोलते हो, sacred lake, तो इन सब में हमें ये कंजर्वेशन कर सकते हैं. Then ex situ conservation, here the protection of biodiversity component in outside the natural habitat. Outside the natural habitat, for example botanical and zoological garden, वो प्लांट बॉटनिकल और जूलॉजिकल गार्डन में लाकर हम उसको कंजर्व कर सकते हैं. जर्म प्लाज्म और सीड बैंक के थ्रू हम कंजर्व कर सकते हैं. टिश्यू कल्चर बैंक हम उसके यूज कर सकते हैं. सैक्रेड प्लांट करके हम उसे लगा सकते हैं. जीन बैंक ये कर सकते हैं. क्रायो प्रिजर्वेशन जो है होते हैं -194 डिग्री सेल्सियस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं. और वो सैक्रेड प्लांट में हम जो लेते हैं वर्ड और पिंपल का वो ऐसे जस्ट जो पेड़ होते हैं हम वो लगा सकते हैं. ये एक सिटू मीन्स आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट एंड इन सिटू मीन्स इनसाइड नेचुरल फॉरेस्ट. तो ये दोनों में डिफरेंस है. दिस इज द वे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देन rehabilitation of threatened species. Here reintroduction and introduction means वो जो प्लांट का इंट्रोडक्शन करना और दूसरे प्लेस पे उसको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज अनदर वे ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ जो रेयर स्पीसीज, रेयर एंडेंजर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज, उसका हम वी कैन यूज रिहेबिलिटेशन फॉर सच स्पीसीज. Then conservation priorities. Already I told which area we have to conserve. Somebody asked this question about biodiversity हमें कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो जो हॉटस्पॉट है हमारे, in previous lecture I told about 36 hotspot. Means we have to focus on this hotspots area. For example, in India there are 2 hotspots. One is Western Ghat and another Himalayan region, and we have to focus we give priority to conservation of such areas. Hotspot. Then rare species. Rare means rare, endangered and threatened species. जो स्पेसीज रेयर है, एंडेंजर कैटेगरी में है, आईसीएन की वगैरह, या थ्रेटन कैटेगरी में है, तो वो स्पेसीज हमें कंजर्व करनी चाहिए. आईसीएन की कैटेगरी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसी स्पेसीज हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन. जो मेगा बायोडाइवर्सिटी जो प्रोटेक्टेड एरिया है हमें क्या करना चाहिए, जो कंजर्व करनी चाहिए. ये हमें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए. पहले क्या करना चाहिए, हॉटस्पॉट, देन रेयर, endangered and threatened species, and then protected areas in mega biodiversity
areas. Around the world, 36 areas qualified as a hotspot. Their intact habitats represent just 2.5% of the Earth land surface. Only just this area cover 2.5% of Earth land surface, but they support more than half of the world plant species as a endemic. Okay, this 2.5% area support more than 50% the plant of the world as a endemic. That is the species found no place elsewhere nearly, and nearly 43% of bird, mammal, reptile, and amphibian species are as an endemic. Therefore, the first priority should give to the conservation of biodiversity hotspot, endemic species, and rare, endangered, and threatened species. ये जो हॉटस्पॉट है इसका ये जो 36 हॉटस्पॉट है वो 2.5% लैंड एक्वायर किया है पूरा प्लैनेट का एंड they support more than half of the world plant species as a endemic, and therefore we have to focus here not only plant species, other species also. For example, 43% of bird, mammal, reptiles, and amphibians are as endemic. Therefore, we have to priority of this conservation of. Here I am showing only this is bird. This is a small grass which was described by Bohr in 1950, and this species was collected by Sidgwick in 1990, and after that nobody has collected this species from Zogfall area, and it is in critical endangered category of IUCN. And after that our guide Professor S.R. Yadav proposed this project for conservation of the small herbaceous species, grass species. The height of the plant is hardly half feet, and it is grows only hanging rock at Zogfall area. And then we took effort of this conservation of this species. First, I am showing here this IUCN category, International Union for Conservation of this nature and natural resources. Here, extinction, threatened, low risk, other these categories. Okay, this category we follow for the this IUCN red list species, and here this is the Syzygium stocksai. This is in endangered category. You see this photo. Endangered category of IUCN. This species was described before 150 years back, and after that nobody has collected this species. But recently we collected this species from Konkan area of Ratnagiri district, and we collected seed and we prepare some seedlings of this species. And we try to conserve of this species in college level botanical garden. We prepare near about 500 seedlings of this species. Okay, and my botany student as well as earn and learn scheme student, with the help of this student, we prepare this nursery, prepare seedlings of this critical endangered and rare species, and we distributed this seedlings of this species free of cost to the forest department, then colleges, various or different people in the society. Then another species, this is the Diplodoc conconensis. Earlier I told that this species also described from Konkan region before 150 years back, and we took effort for conservation of this species. This is a Camptorrhiza indica. Both species are found when I was PhD student at Shivaji University, Kolhapur, and other my colleague and my guru Professor S.R. Yadav, we remove this plant. ये जो प्लेटो दिख रहा है ये प्लेटो के ऊपर होता है कैप्टराइजा. तो हमने क्या किया, इधर बिल्डिंग प्रपोज हो रही थी, तो ये जो स्पेसीज है ये स्पेसीज हमने ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम में किया, और दूसरे जगह कोंकण में वी प्लांटेड इन सिमिलर हैबिटेट. ये जो सिमिलर, ये देखो, दिस इज द मैप, and we planted these species in similar habitat, and now these species are survival very well in reintroduced habitat. And this is the one of one story. Then another story, Hubbard. Already I told this Hubbard is critically endangered. This species was described by Bohr, and the species collected by
L.J. Sedgwick in 1909. Means then we planted this species. This is only grow hanging rock, and we you see this we planted here reintroduce our program in different Ghat region at Western Ghat, and here we planted this with the help of pencil, dried material, and now the plant is grow luxurious in various Ghat. This is the you see photograph dry plant of this Obadiah material collected from the fall area, and this from Marshes Ghat area to care from Wayanad near about 43 Ghat region we planted this species, and that's why the species earlier in critical endangered category, and now the category is low or reduced, and now it is in vulnerable category. And the same work I have presented in International Botanical Congress when I was PhD student in 2011 at Melbourne, Australia. And we tried to conserve the small, beautiful grass and unique genome of this Hobardia. If we not conserve such a species, the entire genome will be lost from this planet, and therefore we have to we are prime duty as a botanist. We have to conserve this such a endemic rare plants from this our area. Then another species that is Ceropegia fantastica. It is a beautiful species, and this is a unique Ceropegia other because of its calyx is longer, much longer, and therefore it is a unique species from other Ceropegia. It is also restricted only two patches. One is at Lolium Plateau and one is Lolium Plateau at Goa, and another place that is in Azra area of Kolhapur district. We collected some this. We took effort for conservation of this species. This is a top view of beautiful flower of Ceropegia, and here we try to tissue culture technique. We standardize protocol for its multiplication by using biotechnological tool. Here you see this slide, and we use the tissue culture technique. This multiplication of this plant by using, and the plant is grows well in nature. This is the first year, and this is the second year. After second year, the tuber is formed, and the plant grown very well in nature. This is the photograph with the help of forest department. We have plantation in various areas, similar habitat in Western Ghat. This plant. This is the seedling and tubers produced in botanical garden by follicle, and here this is the plant prepared by tissue culture technique, and this is the photograph. Some we try to conserve this unique genome at different places in Western Ghat region. Then these are my PhD student, and we also took some unique plant, which we described some 4 species. This is also unique and recently described, and these species restricted only type localities. Only few individuals are in nature. That's why we try to conserve of this species. One is Ceropegia conconensis, Chlorophytum belgamensis, Iliocaris vodudi, and this is Hobardia diandra. This species was we described in 2012. Here, this is my student. We planted this material in our botanical garden, multiply, and also planted in different similar habitat at Western Ghat and Konkan region area. This is the 4 plant and plantation program at this Harichandragarh area and similar habitat area. Then another important, this is invasive plant. Invasive जो plant बाहर के होते हो, for example Australian acacia. Then when I was at Rajapur College, this is a plateau area. There are number of this Australian acacia plant is there. So with the help of this all NSC student and my botany student, we took effort to remove this plant Australian acacia from college campus because it is invasive species, and we planted there our indigenous plant.
जो अपने इंडिजिनस प्लांट है वो उस एनवायरमेंट में ग्रो हो रहे, वो प्लांट हमने उधर ये किया, उसका प्लांटेशन किया. एंड here we took also awareness program about conservation for my BSc student. And then here this is the in summer season as well as in monsoon season, my all nature climb student as well as BSc student in this photograph and training for them. And somebody says this is the वडाच्या झाडाला in मराठी वडाच्या झाडाला आयुष्यभर फेऱ्या मारण्यापेक्षा आयुष्यात एक तरी वडाचे झाड लावले तर आयुष्यभराचे हे मिळेल. And this is the at least means जितने भी पार्टिसिपेंट है एटलीस्ट साल में एक तो ट्री हमने लगाना चाहिए. हम लगाएंगे तो आजू बाजू के लोग लगाएंगे और निश्चित एक 10-20 साल के बाद हमें उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा. ये जो है साइंटिफिक वर्क भी हमारा ये हो गया, पब्लिश हो गया इन दिस जर्नल कवर पेज. One is phytotaxa and another is Ridia. And I am happy to inform you that our new discovery is published on the Ministry of Environment and Forest, Government of India. This plant species जो है कवर पेज का वो निकलता है हमारा बुक पर ईयर, उसके कवर पेज भी आ गए और इसका जो है प्राइम मिनिस्टर के एंड उसका ये होता है और बुक का. और दूसरी जो है जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च को जो एसआरबी का ये का जो रिपोर्ट होता है उसके ऊपर भी न्यू स्पेसीज आए, स्पेसीज के ये हो गए. ये जो है रिसर्च के हाईलाइट है वो हमारे गवर्नमेंट ने भी उसका ये किया कवर पेज पे या उसके ऊपर ये हो गया. दिस इज ऑल्सो थैंक यू. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ टाइम. ये जो स्मॉल ड्यू टू टाइम लिमिट की वजह से एग्जांपल दिखा है स्मॉल, तो ये हम ऐसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं. आपके कॉलेज के स्टूडेंट होंगे या आजू बाजू के होंगे तो हम कुछ सीड कलेक्ट करके वगैरह ये हम ऐसे प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश. इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन यू कैन आस्क. If anybody has question, No question, sir. No question. okay. Hello. Yes, sir. No question, sir. Okay, then no problem. Thank you. I'm here. The thank you. Vote of thanks. I am Bhagwat Karalkar. Good afternoon. Good afternoon, Thank sir. you. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special session. I would like to thank you all the participants and Director Satish Patil sir and Assistant Director Rafi sir and all staff from UGC HRDC academic college from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, and also thank you for Chandore sir for delivered session speech for on biodiversity conservation. Thank you, sir. Yes, sir. No problem, sir. Hello. बोला सर, काही अडचण असेल तर विचारा. ठीक आहे सर. If anybody has doubt, please ask. No problem. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you.
Thank you, sir. So- Thank you. Thank you, sir. Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Huh?
हॅलो सर, डिस्कनेक्ट करू का? हा येस सर, डिस्कनेक्ट करा, काय नो प्रॉब्लेम. Roll number 4, please mute your mic. Roll number 4, please mute your mic. It is official platform.
कोऑर्डिनेटर भी नसते चालू असते शाळा बंद करते येऊन हॅलो हॅलो ते सेमिनार आणि ते मायक्रो टीचिंगचं काय ते काही कळलं नव्हतं मला, तर कोणाला माहित असेल सांगाल का प्लीज? हॅलो हॅलो. हा सर, सेमिनार म्हणजे तुमचा एखादा टॉपिक प्रिपेअर करायचं, त्याच्यावर तुम्ही सेमिनार द्यायचा. सेमिनार द्यायचं, बरं. हा, आणि तो युट्यूबच्या लिंकला तुम्ही ते अपलोड करायचं. मायक्रो टीचिंग म्हणजे काय, 5 मिनिटात तुम्ही, मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म, त्याला हे म्हणतो की ते टीचिंग झाली पाहिजे. 5 मिनिटात तुम्ही तो टॉपिक एक्सप्लेनेशन केलं पाहिजे, त्याला म्हणतो आपण मायक्रो टीचिंग. हो हो. हो. तर मग मी जो सेमिनारचा टॉपिक घेणार आहे तो 5 मिनिटासाठी घ्यायचा का? नाही, एक 5 मिनिटासाठी तुमचा मायक्रो टीचिंग साठी झाला, आणि दुसरा तुम्ही बरं. 20-25 मिनिटाचा जे आपण लेक्चर देतो समजा बरं 30 मिनिट अँड अबव, तो तुमचा एक तो बनवायचा, रेकॉर्ड करायचा आणि तो युट्यूबच्या लिंकला सेंड करायचा तुमच्या, आणि ती लिंक अं, त्यांना पाठवायची.